Hello students. Today I am going to talk on DNA damage and repair. As the carrier of genetic information, the cellular DNA must be replicated, maintained and passed down to the daughter cells accurately. So accuracy of replication should be high. However, there do occur replication errors. DNA is subjected to a lot of stress and strain during replication and cell division. Also, it is exposed to many physical, chemical, and biological agents which enter the cell from environment. All such agents inflict a variety of damages on DNA molecules. So now let's see the major types of DNA damage. First is the single base alteration. There is a single base alteration is there. For example, deamination. Cytosine and adenine undergo deamination to form uracil and hypoxanthine. And thus, the original sequence is thus changed. Deamination occurs spontaneously during the life of a cell. 1 in every 10 raised to 7 cytosine bases in DNA undergoes deamination in 24 hours. About 100 such events occur every day in DNA. Even deamination of adenosine occurs, but it is of a much less as compared to cytosine, and so is insignificant in compared to cytosine. Deamination of bases can also be chemically induced. A wide variety of chemicals are present in environment to which all of us are exposed, such as insecticides and pesticides, pollutants, including gases, oxidizing agents, alkylating agents, industrial waste, food adulterants, and preservatives which are used in the food. All these chemicals causes modifications of bases by deamination and leads to DNA damage. The next is a single base alteration is because of depurination. Depurination or depyrimidination, that is the removal of a purine or a pyrimidine base from the nucleotide. It's due to spontaneous hydrolysis of the N-glycosidic bonds which connect the base to the deoxyribose. Then another type is because of the base alkylation. Alkylating agents like dimethyl sulfate and nitrogen mustard cause alkylation of bases. An example is of guanine. Guanine is changed to 6-O-methyl-guanine. The modified guanine forms base pairing with thymine rather than cytosine and ultimately cause a mutation. Another is the insertion or deletion nucleotides. It's caused due to ethidium bromide and ecridins causes insertion or deletion of nucleotides. Incorporation basis analog. Here there is incorporation of base analog. Analog means they are structurally similar. For example, 5-bromouracil, which is a structural similar, or you can say analog of thymine, and 2-aminopurine. They are more likely to be incorporated during replication rather than the normal nucleotides. Next major type of DNA damage is because of 2-base alteration.
Ultraviolet radiations result in the formation of covalent links between adjacent pyrimidines, forming pyrimidine dimer. For example, thymine dimer. So such alteration leads to DNA damage. The next type is because of the chain breaks by ionizing radiation. X-ray and gamma rays can cause strand breaks in the backbone of DNA molecule. These breaks could be in a single strand or in both the strands. Cross-linking of strands may also occur. Anti-cancer drugs act like radiation and can cause strand breaks, base substitution, etc. Chain breaks because of oxidative free radical formation. Hydrogen peroxide, hydroxyl radical, and superoxide radical are highly reactive species. They cause oxidation of deoxyribose, purines, or pyrimidine bases, and even strand breaks. For example, conversion of deoxyguanine to 8-oxo-deoxyguanosine. Cross-linking can occur between base in same or opposite strands, and cross-linkage can also occur between DNA and proteins. So these are the major types of DNA damage. So these all will lead to damage of DNA. The average rate of replication error of DNA is 1 base pair in 10 raised to 10 base pair per cell cycle. Normally, all these errors are repaired by the proofreading mechanism of DNA replication, and genetic information transmission occurs without any error, means with high fidelity. But error may occur despite proofreading activity. एवरेज में रेप्लिकेशन एरर 1 बेस पेयर 10 रेज टू 10 बेस पेयर पर सेल साइकिल में होता है. और नॉर्मली ये जो भी एरर होते हैं वो प्रूफ रीडिंग जो मैकेनिज्म है डीएनए रेप्लिकेशन में उससे वो ठीक हो जाता है, ठीक कर देता है, और जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसका ट्रांसमिशन होता है कोई एरर के बगैर. पर इसके बावजूद भी, ये प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म के बावजूद भी एरर रहता है. There are continuous surveillance and repair utilizing a plethora of efficient damage response mechanism to maintain genomic stability. These include processes that recognize and repair the damage. Then there are cell cycle checkpoint activation also occurs in the presence of damage, and there are mechanisms such as apoptosis as a final fate for a damaged cell with irreparable DNA. Continuous surveillance रहता है रिपेयर का, और इसको डैमेज रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है जिसमें काफी सारे प्रोसेसेस होते हैं. एक तो वो रिकॉग्नाइज करेगा जब भी डैमेज होगा और उसको रिपेयर करने की कोशिश करेगा. दूसरा है जो सेल साइकिल चेक पॉइंट्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएगा, और जब तक वो डीएनए डैमेज हुआ है वो रिपेयर नहीं होगा तो सेल आगे प्रोग्रेस नहीं करेगा. लास्ट में अगर ये डैमेज रिपेयर नहीं हुआ, ये जो डीएनए डैमेज रिपेयर नहीं हुआ, तो वो सेल का डेथ हो जाएगा, मतलब सेल एपोप्टोसिस में जाएगा. ठीक है, सेल डेथ हो जाएगा. रिपेयर ऑफ डैमेज डीएनए is critical for maintaining genomic integrity and thereby preventing the propagation of mutation. जो डैमेज डीएनए है
उसका रिपेयर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो आगे जाके म्यूटेशन करे. The cell possesses an inbuilt system to repair the damaged DNA. There are 4 mechanisms of DNA repair: base excision repair, nucleotide excision repair, mismatch repair, and double strand break repair. सेल में एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है रिपेयर का, जिसकी वजह से वो डैमेज डीएनए को रिपेयर करता है. ये 4 है, ये डिफरेंट सिस्टम्स है जिसकी वजह से डीएनए रिपेयर होता है. The basic mechanism of all the 4 is the same. That is, first it will recognize the distorted region, then it will cut and remove that damaged region, then it will fill the gap by DNA polymerase, and then it will seal the gap by DNA ligase. ये चारों का मैकेनिज्म सेम ही है कि वो जहां पे भी जो डैमेज हुआ है वो रिकॉग्नाइज करेगा, उसको कट करके रिमूव करेगा, और वो जो गैप है उसको डीएनए पॉलीमरेज से भरेगा और सील करेगा डीएनए लाइगेज से. नाउ लेट्स सी ईच ऑफ द मैकेनिज्म. First, we will see the base excision repair of DNA. Now, if you see in this, this is the DNA. Here, if you see, there is a damage. Deamination converts a cytosine base into a uracil. Here, it should be cytosine. If you see, this is the G guanosine. So, here it should be cytosine. Instead of cytosine, a deamination has occurred and there is a cytosine. There is a uracil. So with the help of base excision repair mechanism, the enzyme uracil DNA glycosylate will remove this, will detect the uracil and it will remove the base. Then with the help of endonuclease, the backbone of the DNA strand is cut and removed. Then with the help of DNA polymerase, the cytosine is added and this is sealed by the help of DNA ligase. So can you see now, instead of uracil, this damaged DNA has been repaired and the new base pair, the cytosine, is added. So this is the base excision repair mechanism. ये जो डीएनए है आप देख सकते हो यहाँ पे डैमेज्ड है, यहाँ पे साइटोसिन के बदले डीएमिनेशन होके यहाँ पे यूरेसिल है. तो ये जो मैकेनिज्म की वजह से ये अब रिपेयर होगा. उसमें यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेट जो एंजाइम है वो यूरेसिल को रिकॉग्नाइज करके उसको कट करके रिमूव करेगा. फिर एंडोन्यूक्लियस है, वो ये जो डीएनए का जो बैकबोन है उसको कट करके रिमूव करेगा. फिर डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से ये जो न्यू साइटोसिन, न्यू जो बेस है, इसके बेस पैरिंग रूल के हिसाब से ये जो साइटोसिन है उसको ऐड करेगा और फिर डीएनए लाइगेज से ये जो यहाँ पे जो गैप था उसको सील करेगा. तो आप देख सकते हो ये जो डैमेज था उसको रिपेयर किया है. तो यहाँ पे साइटोसिन, ग्वानोसिन के बेस पैरिंग रूल के हिसाब से साइटोसिन होना चाहिए. तो बेस एक्सिशन रिपेयर के वजह से ये रिपेयर, डैमेज डीएनए का रिपेयर हुआ. नाउ वी विल सी न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर. This mechanism is used to replace a region of damaged DNA up to 30 base pair in length. Commonly repaired damage of DNA by this mechanism are ultraviolet induced thymine dimers, base modification, strand breaks, and strand cross linkages caused by cancer, chemotherapeutic drugs, ionization radiations, and environmental chemical. This repair mechanism involves enzymes called excise nuclease. Now, if you see here, there are thymine dimers. It is produced by the
UV, because of UV radiation. Now this defect is recognized, and if you see surrounding area, a bubble is formed. Then with the help of excise enzymes, this region is cut out from the bubble. Then with the help of DNA polymerase 1 in prokaryotes and DNA polymerase epsilon in human, this gap is filled. So new DNA strand is produced. And there is a gap in between this, the old strand and the new strand, that is filled with the help of DNA ligase. ये जो दूसरा मैकेनिज्म है रिपेयर का, जो है न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर, ये जो मैकेनिज्म, इससे जो डैमेज डीएनए है करीब 30 बेस पेयर्स का लेंथ का चेंज किया जा सकता है, रिपेयर कर सकते हैं. और जो भी डैमेज डीएनए जैसे अल्ट्रावायलेट इंड्यूस्ड थायमिन डाइमर हुआ, या फिर बेस मॉडिफिकेशन, स्ट्रैंड में ब्रेक हुआ, या स्ट्रैंड में क्रॉस लिंकिंग हुआ, ये सारा ये न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर उसको ठीक कर सकता है. और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है वो है एक्सी न्यूक्लियस. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है थायमिन डाइमर. ये जो थायमिन डाइमर है ये यूवी रेडिएशन से प्रोड्यूस हुआ है. तो यहाँ पे ये थायमिन डाइमर को रिकॉग्नाइज करके यहाँ पे एक बबल फॉर्म हुआ है. आप देख सकते हैं ये अलग सा हो गया है, बबल फॉर्म हुआ है. ये जो बबल है फिर एक्साइज न्यूक्लियस के हेल्प से ये जो बबल है ये दोनों साइड से कट होके इसको निकाल देंगे. और ये निकालने के बाद ये जो गैप है वो डीएनए पॉलीमरेज 1 प्रोकैरियोट्स में और डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन ह्यूमन में, ये जो गैप है वो वहां पे नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा. और ये जो स्ट्रैंड है उसके यहाँ पे ओल्ड और न्यू के बीच में यहाँ पे गैप है. ये जो गैप है वो डीएनए लाइगेस उसको सील करेगा. एंड इस तरह से न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर इस तरह से होता है. नाउ वी विल सी मिसमैच रिपेयर ऑफ डीएनए. This is the DNA strand. Now this one is a template strand and this is the new DNA strand. Now if you see here on the new DNA strand, this base is mismatched. Instead of A, it is G. Okay. Now first thing is that it has to be recognized with which one is the new DNA strand. Now the template strand of this strand, the template strand of the DNA is methylated, while the newly synthesized, this one is non-methylated. Okay. Now the difference, this difference allows the recognition of the new strand and locate the point of mismatch, and this requires a GATC sequence. GATC sequence will be there on the template strand. Okay. So the next thing will be this GATC endonuclease will recognize this GATC sequence near the methylated template strand, and this mismatch nearer to that, the mismatched this newly synthesized strand will be cut and it will be removed, and exonuclease will digest this defective strand and remove it completely. Then this gap will be filled by DNA polymerase by the base pairing rule. Here if you can see adenine is bound. First it was guanine, now it has replaced by adenine. Okay, and this way this small gap will be filled. Then with the help of DNA ligase, this gap is filled and it is sealed. Okay, can you see? So now the DNA strand is formed with the correct base pair. ये आप देख सकते हो, ये जो है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, उसमें से ये न्यू डीएनए स्ट्रैंड बना है. ये जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड है उसमें ये है, ये मिसमैच है.
ठीक है, यहाँ पे ए होना चाहिए, टी के सामने ए होना चाहिए पैरिंग में, लेकिन यहाँ पे जी है। अब पहला चीज ये करना है कि कौन सा टेम्पलेट है, कौन सा न्यू डीएनए स्ट्रैंड है, वो आइडेंटिफाई करना है। टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो हमेशा मिथाइलेटेड होता है और न्यू डीएनए स्ट्रैंड नॉन मिथाइलेटेड होता है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक सीक्वेंस है GATC सीक्वेंस, वो ए मिथाइलेटेड के पास में होता है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए GATC एंडोन्यूक्लियस है। तो वो जो जहां पे मिसमैच हुआ है उसके आजू बाजू वो उसको कट करके रिमूव करेगा, और ये जो रिमूव किया हुआ है उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम है एक्सोन्यूक्लियस। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज वो नया सा जो गैप है उसको, वो जो यहाँ पे उसको वो करेक्ट न्यूक्लियोटाइड से उसको फिर से बनाएगा, और ये जो शॉर्ट जितना डीएनए स्ट्रैंड है उसको सिंथेसाइज करेगा, और उसके बाद डीएनए लाइगेज उसको सील कर देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो तो करेक्ट बेस पेयर वहां पे बाइंड होगा, पेयरिंग होगा। तो यहाँ पे थाइमिन पे एडेनिन होगा, पहले जी था, ग्वानिन था, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एडेनिन है। तो इस तरह से मिसमैच रिपेयर ठीक होता है। Now we will see the fourth mechanism, that is double strand break repair. Double strand breaks occurs as a result of excessive exposure to radiations like ultraviolet rays and X-rays. It's dangerous. They result in genetic recombination which may lead to chromosomal translocation. Double strand breaks can be repaired by homologous recombination or non-homologous end joining. Homologous occurs in yeast, while in mammals non-homologous end joining dominates. जो फोर्थ मैकेनिज्म है वो है डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर। वो जब बहुत ज्यादा एक्सपोजर रेडिएशन का, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज और एक्सरेज है, उसकी वजह से डबल स्ट्रैंड ब्रेक होता है। ये काफी डेंजरस है क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन होता है, और ये रिपेयर होता है होमोलोगस और नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग से। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन ईस्ट में होता है और मैमल्स में नॉन होमोलोगस होता है। नाउ वी विल सी द some of the human hereditary diseases and cancer associated with DNA defect. Hereditary non-polyps colorectal cancer. This cancer occurs because there is a defect in the DNA repair system because of the DNA mismatch repair. They are sensitive to ultraviolet radiation and chemical mutagens, and they are susceptible to cancers like colon and ovary. And symptoms you find is symptoms are seen very early developments of tumor. Xeroderma pigmentosum. Here the defect is nucleotide excision repair defect is there. They are sensitive to UV radiation and point mutation. Skin carcinoma and melanomas occur. Skin and eye photosensitivity and keratosis. There is defect in the repair of double strand breaks. The disease is Bloom syndrome. Here there is the defect is repair of double strand breaks of homologous recombination is not repaired, and they are sensitive to mild alkylating agents and cause cancers, carcinomas, leukemia, and lymphomas. Their photosensitivity, facial telangiectasis, chromosomal alterations, Fanconi anemia. Here again the defect is the repair of double strand breaks by homologous recombination. They are sensitive to DNA cross-linking agents, reactive oxidant chemicals, and they are susceptible to cancers like acute myeloid leukemias, squamous cells carcinoma. Symptoms you find developmental abnormalities including infertility and deformities of the skeleton and anemia. Hereditary breast cancer. Here the breast cancer gene
is deficient. That is BRCA1 and BRCA2. BRCA1 and 2 are actually the tumor suppressor gene. They prevent the breast cancer and help DNA repair breaks. But as these genes are deficient, they will lead to breast and ovarian cancers. Here the defect is the repair of double strand breaks of homologous recombination. Okay, so here the person will have breast and ovarian cancer. So that was about DNA damage and repair, and I'll put a link below this video for the descriptive answers. Do like my video so that others will also come to know that such lectures are being put. And do subscribe if you haven't subscribed my channel. Do subscribe so that you get the latest updates of my new videos. Thank you so much.